Hello everyone. I hope you all are good and solving lots of questions. Let us do this one now. And ये question बहुत ही अच्छा है in order to learn how to handle circuits, AC circuits where inductor, capacitor and resistor are not directly connected in series. Rather, maybe two pairs are in series, another two pairs in series and then both are connected in parallel. That is the case here, right? So we will get to learn कि ऐसे circuit को हम handle कैसे करते हैं in case of AC. ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं हमें निकालना क्या क्या है एंड व्हाट थिंग्स आर गिवन वी आर गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ द बैटरी एट सर्टेन इंस्टेंट दैट इज 20 वोल्ट एंड देन वी आर आस्क्ड कि ये बैटरी जो है वो कितना करंट डिलीवर कर रहा होगा देन दैट इज व्हाट वी आर आस्क्ड एंड देन यू कैन सी देयर इज वन कैपेसिटर वन इंडक्टर एंड टू रजिस्टर्स कनेक्टेड लाइक दिस we are expected to calculate this current and then voltage across 100 ohm and 50 ohm resistor. That will also require us to calculate current through these two branches. So let's say this I current coming over here will get divided in this branch as I1 and in this branch as I2, let's say. बट दिस इज एसी सर्किट हमेशा दिमाग में रखना देखो वी नीड टू अप्रिसिएट दिस क्वेश्चन नॉट ओनली जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन आई इज इक्वल टू जब आप I1 प्लस I2 करोगे ना यू कैन नॉट डू इट स्केलरली these three are vectors you can say so I is a vector and this will be vectorial sum of I1 and I2 so never calculate just current in this branch current in this branch and then add it the way we add in electrical circuit other electrical circuit ठीक है यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसे so first let us try to calculate I and for that we will first calculate impedance of the circuit so इस circuit का impedance कहने का मतलब ये वाला portion right so let's call it branch 1 and let's call it branch 2 so for branch 1 let's say impedance is Z1 and that will be equal to resistance of the resistor that is 50 ohm plus what रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस को हम इम्पिडेंस बुलाते हैं कैपेसिटर के लिए भी इम्पिडेंस बुलाते हैं सो इसका इम्पिडेंस हम कैसे लिखते हैं ओमेगा एल ठीक है ओमेगा गिवन इन द क्वेश्चन इज 100 एल इज हाउ मच 5/10 so this will become 50 done है but we need to indicate it vectorially and to make the calculation simple we use complex number here और complex number को हम कैसे यूज करते हैं देखो अगर तुम्हें XL को लिखना है ना तो आप लिखना J ओमेगा L और अगर आपको XC लिखना है ना तो 1/J ओमेगा C ऐसे लिखना ठीक है व्हाट इज दिस J दिस इज सेम एज I जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z इक्वल टू आप लिखते हो A प्लस IB A is a pure number and B is your what I mean, B is that imaginary part, right? So if you compare this with this one, this I and J are same. But actually क्या है ना mathematics में इसको I बोलते हैं, but electrical circuits में when we use it or when in electricity we use it, we simply replace I with J. This is just a pictorial replacement, nothing else. Concept same है, ठीक है? चलो, so 50 ohm plus J50 that I will write. डन है सो दिस इज दिस Z1 एंड Z2 को हम क्या लिखने वाले हैं Z2 को आप लिखोगे दिस हैज 100 ओम प्लस 1/J ओमेगा C ओमेगा इज हाउ मच 100 C इज हाउ मच बताओ C इज योर 10 to the power -6 into 100 right so this will become how much 100 ohm plus 1 by J and this 100 अब देखो J तुम्हारा बॉटम में है वी शुड टेक इट टू द टॉप सो यहाँ पे J से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे J से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो सो यू विल बी गेटिंग 100 ओम प्लस दिस इज ऑल्सो इन ओम राइट सो 100 ओम प्लस J का स्क्वायर इज -1 याद रखना क्योंकि I का स्क्वायर इज -1 सो J स्क्वायर इज -1 now let's put it here so minus 100 minus J 100 ohm ठीक है so this is 100 minus J 100 okay so we have got Z1 and Z2 Z1 is how much 50 plus J50 and how much is the Z2 that is 100 minus J100 अब चलो इन दोनों का मॉडुलस निकाल लेते हैं अगर तुम्हें मॉड Z1 का वैल्यू पता है लेकिन अभी निकालने का फायदा नहीं क्योंकि पहले चलो करंट निकालते हैं आई निकालते हैं एंड फॉर कैलकुलेटिंग आई वी नीड टू कैलकुलेट नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट अगर Z1 का मॉड निकालेंगे वी विल गेट इम्पिडेंस ऑफ दिस ब्रांच
and then of this branch. Let us first calculate impedance of the whole circuit. और उसके लिए आप क्या करोगे, 1 by Z will be equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2. Simply solve this thing, ठीक है. अब आप इसको लिखो 1 by 50 1 plus J plus 1 by 100 1 minus J. अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तरह से सॉल्व करते हो आप सॉल्व कर लो. सो 1 by 50 आप लिखोगे 1 plus J. Those who are new to this complex number, to them I will tell 1 plus J है ना, 1 minus J लिखो टॉप में and then also in the bottom, so that equation, basic equation is not getting changed and we will be able to solve also. क्योंकि जे स्क्वायर का टर्म मैं लाना चाह रही हूँ, दैट विल बिकम -1, सो बॉटम से जे हट जाएगा, ठीक है. सो 100 1 माइनस जे. अब 1 प्लस जे से आप ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सो नीचे भी 1 प्लस जे, सॉरी जे कैप नहीं जे, ठीक है. सो दिस इज हाउ मच, 1 माइनस जे डिवाइडेड बाई 50. 1 प्लस जे 1 माइनस जे विल बिकम 1 माइनस जे स्क्वायर प्लस एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा कहीं तो गड़बड़ किया मैंने, कुछ किया क्या, नहीं सही किया है. 1 प्लस जे डिवाइडेड बाई 100 1 माइनस जे का स्क्वायर. अब देखो 1 माइनस जे का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस ऑफ -1 एंड दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो इसकी जगह आप 2 लिखो. सो 1 बाई जेड को क्या लिखोगे, 1 माइनस जे डिवाइडेड बाई 50 इंटू 2 प्लस 1 प्लस जे डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2. कुछ ऐसा आया है ना. सो एक काम करते हैं, न्यू डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स राइट हियर 2 this and 200 plus 1 plus j by 200. So this will become how much, 2 minus 2j plus 1 plus j divided by 200. So how much you are going to get, 3 minus j by 200. This is 1 by z. अब आप 1 by z का मॉड निकाल लो. सो मॉड यू कैन कैलकुलेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इफ इट इज z इक्वल टू a प्लस आई पी, देन इट्स मॉड्यूलस यानी कि इट्स मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो यू कैन ट्रीट इट लाइक these are two vectors, one along the x axis that is real part and another along the y axis that is imaginary part. So summation of these two vector will be nothing but root under a square plus b square. Similarly you treat it. So इसको अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1 by 200 रूट अंडर 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1. सो दिस इज इक्वल टू रूट 10 by 200 दैट इज 1 by z, राइट. सो z का वैल्यू क्या होने वाला है, z का वैल्यू होने वाला है 200 by root 10. Now what will be the I value, I is what, 20 by z. So 20 divided by 200 into root 10. So इसको अगर आप solve करते हो, how much you are getting, 1 by root 10 and that will give you near about 0.3, right. So correct answer should be which one, it should be 1. Now B is not correct, it means. Now let's check for C and D, and for that we need to calculate what will be current through this branch and what will be current through this branch. Let us now do this one. So if you talk about this branch, this branch we have given impedance. Z1 का value क्या आया था, 50 plus J50, and if you remember to this branch we have got 100 minus J100. अगर हमें direct answer लाना है, we can do it very easily. करंट का मैग्नीट्यूड निकालने से ही काम चल जाएगा. सो मॉड Z1 अगर आप निकालते हो ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, you will be getting 50 root 2, and if you calculate mod Z2 you will be getting how much, 100 root 2, and what will be the value of I1 I2. So I1 मैं निकालती हूँ, I1 is current through this one. So I1 का वैल्यू क्या होने वाला है, 20 by 50 root 2, that is your 2 by 5 root 2, and what is going to be the value of I2, that will be your again 20, क्योंकि voltage drop is same across these two, they are in parallel. Done it. So voltage across these two branches are nothing but 20 volt. So 20 divided by 100 root 2, and if you solve it you will get it 1 by 5 root 2. Now what is the voltage drop across 100 ohm? So voltage drop across 100 ohm will be nothing but 1 by 5 root 2 into 100. So that will give you how much, this is 20, so that will be 10 root 2. So that option C seems correct, right. And if you calculate voltage drop across 50 ohm, ऑप्शन में 10 वोल्ट दिया है, चेक करते हैं. यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो,
करंट क्या है, 2/5√2 × 50 करोगे आप, और अगर 50 करते हो तो ये कितना आ रहा है, 20/√2 एंड सेम 10√2 आ रहा है ना? So that option is correct. Correct answer for this question will be A and C. But there is more we can understand in this question. Let us learn a bit more. So यहाँ पे अगर मुझे I ऐसे निकालना हो, such that first I am calculating I1 and then I am calculating I2 and then I am adding them vectorially. Done it? And so for that we need to know angle between I1 and I2. And that we can calculate by calculating what is the phase of I1 with voltage drop across the branch 1 and what is phase of I2 with voltage drop across branch 2. And voltage drop across branch 1 and branch 2 is same, right? So that is how much? 20 volt. It will have certain phase at that point of time. So let's say it has a phase of this one, this line. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द ब्रांच वन. अगर ब्रांच वन की आप बात करो, देन इट लुक्स लाइक व्हाट, देयर इज वन इंडक्टर, देयर इज वन रजिस्टर एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. डन है. एंड इफ यू कैलकुलेट phase difference between current and voltage in this case, let's say current is I1 here, I have indicated, and voltage को V से चलो लिखते हैं. So अगर यहाँ पे आप phase difference between current and voltage निकालोगे, then what will be that value? So आप लिखोगे tan phi is equal to XL by R, है ना, क्योंकि आप ऐसा ट्रायंगल बनाओगे, this is XL, this is R, there is no XC, right, in this circuit, and this will be your phi. So tan phi is XL by R, that is 50/50, and that is your 1. For the, sorry, 50/50, that is 1, so phi is your 45 degree. डन है. सो इससे हमें ये समझ में आता है कि फेज डिफरेंस ऑफ 45 होगा, लेकिन विच वन विल बी अहेड एंड विच वन विल बी, I mean, which one will lead and which one will lag. So, inductive circuit, this is an inductive circuit, right? This is inductive in nature. So, in case where circuit is inductive in nature, current will lag voltage by a certain angle. डन है. प्योरली इंडक्टिव हो तो 90 डिग्री से, लेकिन ये प्योरली इंडक्टिव नहीं है, देर इज रजिस्टर ऑल्सो. सो इट विल लैग बाई सर्टेन एंगल लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ पे करंट कितने से लैग कर रहा है, 45 डिग्री से. सो दिस विल बी द I1 का लाइन. ठीक है, दिस इज योर 45 डिग्री एंड दिस इज द वोल्टेज लाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड ब्रांच. सेकंड ब्रांच की अगर आप बात करो तो कैपेसिटर है एंड देयर इज रजिस्टर. सो दिस इज नॉट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, रादर कैपेसिटिव इन नेचर. डन है. यहाँ पे भी अगर आप tan phi निकालो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे XC/R. दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट. सो दैट इज 100/100. सो फिर से क्या मिलने वाला है, 1, यानी कि phi क्या है, 45. Again, voltage line to same hai V, because same voltage is dropping across these two branch, so that is same. And here also angle between current and voltage is 45 degree. But in this case current will lead voltage by 45 डिग्री. डन है. सो यहाँ पे अगर आप I2 बनाते हो तो यू विल मेक इट लाइक दिस I2. सो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 45. सो I1 एंड I2 आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर. अगर आपको याद हो तो I2 का वैल्यू हमें कितना मिला था, 1/5√2 एंड 2/5√2. तो देखो I का वैल्यू क्या होगा, 2/5√2 का स्क्वायर प्लस 1/5√2 का स्क्वायर. ठीक है, वी शुड गेट 1/√10. चेक करते हैं, चलो. सो दिस इज 4/25 इंटू 2 प्लस 1/25 इंटू 2. सो इसको ऐसे कट कर लो, what you will be getting. सो अगेन मैं यहाँ पे 2 से, या फिर कट नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं, वी विल बी गेटिंग सेम न्यूमरेटर, दैट विल हेल्प अस. ठीक है. So this is 25 into 2 and 4. So if we do this, we will be getting how much? 5/50, you can clearly see. And this is equal to nothing but 1/√10. And that is equal to nothing but 0.3 ampere. So we have got the answer, right? Done है. So in this question, we could have gone this way also. I1, I2 को हम निकाल कर ऐसे add भी कर दिए होते. Done है. Only thing is कि you needed to calculate phase difference. और phase difference आप easily calculate कर सकते हो, क्योंकि you have that circuit. अगर दो तीन चीज सीरीज में होता है ऐसा, देन वी नो हाउ टू ड्रॉ देयर फेजर. डन है. सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं XC-XL, यहाँ लिखते हैं R, दिस इज 5. डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज प्रेजेंट व्हाट इज नॉट, यू कैन राइट द वैल्यू प्रॉपरली. जैसे tan phi को हम क्या लिखते हैं, XC-XL/R. ठीक है. सो this way you could have calculated phi, you could have known angle between I1 and I2, and in that case you could have calculated I from I1 and I2.
I hope you have understood this question. Even if not, if you felt like somewhere you couldn't, you can always let me know in the comment section. Thank you.